Hi guys, welcome to this video. I am Prashant, I am the founder of WordPandit, and I am bringing this series of videos to you wherein I explain what do you do for PI prep, for WAT prep. WAT stands for written assessment test, in simple words essay writing, and GD prep. This is essentially for your second round of preparation when you get selected to be schools, when you get the calls, you get the call selected for the second round. What do you do? How do you go about preparation? I know we are starting early with this, and this is quite an early entry point for such a topic, but it is, and by the end of this video, trust me, you will believe and you will understand that why is it important to introspect, right? And what do I mean by introspection? Now, the one common thing that I have seen with respect to a lot of candidates, and this is something which has happened over a period of time, it happens in my experience every year, every single year, I see people with a lot of self-doubt. And these are people, and these are students who would come to me and who would say that they've done nothing special, right? And their CV just does not have enough number of things. हमारा काउंट करने का तरीका पता क्या है अपने CV का अच्छा या बुरा होने का? उसमें सर्टिफिकेट कितने हैं, फाइल कितनी मोटी है, that's the criteria. How thick is the file? How many certificates in it? So हम उस तरीके से सोचते हैं. That's not necessarily the right way to go about it. The key to success is actually introspection. You introspect, I'll recommend you to do one very simple thing. एक notebook setup कर लो, ठीक है, अभी से एक, and buy a good nice notebook, right? एक अच्छी notebook लो, which makes you happy. It should be a notebook that you should feel good when you write in it. And don't do this digitally. Have a notebook. Pick up a pen and do this. Pen and paper. उसमें ना अपनी सारी की सारी have a peek into your being. देखो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, तुमने क्या क्या किया आज तक, ठीक है? इसके साथ साथ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और आज तक तुमने जो जो किया है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी गेम हो सकती है, यार गली में नुक्कड़ में क्रिकेट खेला हो या किसी स्टेट लेवल पे खेला हो, क्या एक्टिविटीज करी है, एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट यू डन, डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, कॉन्टेस्ट्स, जहाँ भी पार्टिसिपेट किया है, और अगर कहीं पे नहीं भी किया है तो वो भी आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है? Or then correspondingly to everything that you've done, you might have scored well in a particular subject, in a particular class, you might have achieved something, or at a certain point of time you might have helped someone, right? So there is no such criteria for this being an academic thing, non-academic thing, being related to contests, कुछ भी नहीं. ये सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये अकेड से ही रिलेटेड है या नॉन अकेडमिक है. सब कुछ लिस्ट डाउन करो और अपनी लाइफ को मैप करो और देखो तुम्हारी किस एक्टिविटी के लिए तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ या वीकनेस है, ठीक है? उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि तुम्हारे पास अब जो आगे का पाथ है, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, कौन कौन सी चीज़ें फिक्स हो सकती हैं. और डू वन थिंग, डू नॉट रन आफ्टर सर्टिफिकेट्स, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल क्लैरिटी, राइट? तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CAT 23, 24, इवन फॉर CAT 25, like 2 years away, then also you should have this conversation with yourself, right? And try to figure out कि हम कर क्यों रहे हैं ये, and क्या possible way है improve करने का. अब से लेके जब तक तुम्हारा इंटरव्यू होता है, चाहे वो अगले साल हो या उसके अगले साल हो या उसके अगले साल हो, तब तक जो भी करो, अब जो भी चीज़ करो, जो भी एक्टिविटी करो, वो क्लैरिटी के साथ करने की कोशिश करो. योर ऑब्जेक्टिव शुड बी कि मैं जो भी करूँगा मैं वो क्लैरिटी के साथ करूँगा. आई शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट ऑन दैट. एंड जो भी मैं प्रेजेंट करूँ ना वहाँ पे जाके, मैं अपने बी स्कूल में या अपनी इंटरव्यू में जाके जो भी मैं प्रेजेंट करूँ, दैट शुड बी समथिंग विच मेक्स सेंस, राइट? सो जो भी चीज़ करो ना, अपना आइडेंटिफाई करो यार ये क्यों कर रहे हो, ठीक है? एक पाथ फिगर आउट कर लो कि मैं अगले 1 से 1.5 साल में ये करने वाला हूँ, राइट? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड माई प्रोफाइल, राइट? यू डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. डू नॉट गेट सक्ड इनटू बिलीविंग कि बहुत सारी चीज़ें करनी है. जो भी करो क्लैरिटी से करो. वो क्लैरिटी ना सिर्फ एक चीज़ से आ सकती है, जो तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, और वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम इंट्रोस्पेक्शन करोगे, राइट? सो योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज इंट्रोस्पेक्शन. दिस इज इट. गेट इन टच विद योर सेल्फ. और इसको करने के लिए ना यू कैन फाइंड अ मेंटर, राइट? मेरा यहाँ पे बायस है, एंड आई एम वेरी क्लियर विद माई बायस दैट आई रन अ कोर्स फॉर दिस, एंड हेंस इन अ वे माई बायस इज प्रीटी क्लियर दैट व्हाई एम आई डूइंग दिस, राइट? विच इज परफेक्टली फाइन एज लॉन्ग एज आई हैव क्लैरिटी, राइट? सो नाउ हमें एट टाइम्स ना साउंडिंग बोर्ड चाहिए होता है, ठीक है? सो दिस कैन बी समवन हु इज वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, समवन हु इज वर्कड इन
the public sector units for a very long period of time, someone who's had great experience, someone who's had deep enriching experience. This could be a senior in your college who's in a B school now, who's in a top ranked B school, anyone that you can identify. The only thing is the person should be a sane and rational and logical person with whom you can have a discussion and you can have an honest and frank discussion, right? This will reveal sides of your personality that you are also not aware of, right? Have a sounding board, have someone to communicate to, and then figure out your answers. So that is something which is very, very important. For this specific reason, I run a course. As I said, I have a bias, so this is my bias as well, right? We've got live sessions, we've got mock PI sessions, Zoom calls, GD sessions, essays with feedback. You get to record your PI sessions, previous year database, knowledge boosters, other relevant GK material, blah, blah, blah. All of this is great, but most importantly, you've got mentorship. You'll connect on a one-on-one basis with me. We'll try to figure out things. So that's the most important thing. For me, that is the most important thing in your preparation. So this is what we do with our course. In fact, the SNPI course is also part of the Platinum plan. So when you buy the VRC plan and you buy the Platinum plan, you get the SIPI course packaged, bundled in it. So completely up to you how you go about it. But these are the important things that you've got to keep in mind. Most importantly, whatever you do, जैसे भी learn करते हो, एक चीज हमेशा याद रखना, do it with a face which is happy, do it with a soul which is happy, because that is the most important thing. A smile on your face while learning, it goes a long way in alleviating your stress, right? So on that note, we end this video as we end every other video. Just one thing to say to you, just one thing to wish to you: happy learning.